यार इसका पहला शॉट मस्त होता है ना, वो वाला, This is the ये most शॉट, ये epic शॉट shot. है ना। We were discussing na that day when we were watching. हाँ हाँ हाँ, बट उस दिन रिकॉर्ड नहीं हुआ था शायद, हम रिकॉर्ड नहीं कर रहे थे उस दिन जब हमने ये, नहीं वो है ना। बस ऐसे ही random matter करते हैं but this will go down the line of cinema like whenever some award is gonna happen na हाँ this show might be taken into consideration the director's cut or the something like that. लुक एट बोथ And द ट्रैक। both the dragons are protective of their riders. So as they are approaching each other, they are also very protective of their riders. हाँ, Yes, very great observation. एंड सी हाउ डिफरेंट दे लुक, दोनों ड्रैगन्स हैं बट अलग दिख रहे हैं, राइट, सो डिफरेंट, सो He's a डिफरेंट। male and she's a female man. अच्छा, Cyrex is male, No, female. female, right? You know, there is one thing said that normally when there is a rider couple, हम्म, so the dragon also mate the respective अच्छा, dragon and that couple also mate together. So Rhaenyra was by political or on paper married to Lenor, but their dragons never mated. Syrax actually mated with Caraxes because Rhaenyra had feelings for Daemon ओह, from the start. That's why. क्रेजी, एंड दिस इज देयर इन द बुक्स। Yes, it is there. And later on, when they actually marry, then though it's open. This theory is this all. Alpesh is having fun with the claps. I am Please discovering. tell me now, how do you clap? Like I'll also clap on Vivek's or your point. I also want to clap. On the Alpesh, can you give directions where it is? Left bottom it will be, I think. Either I'm using mobile. I did not find it on PC. Okay. Yeah, if I move Left now, my bottom. screen will change because I'm capturing the I whole got it. I screen. got it. I got it. More fun reactions. Hey, there is soundboard करके है एक हाँ नीचे. वही, Nice. Soundboard. See, I'm gonna clap. Wow. सही टाइम पे क्लैप किया क्योंकि यहाँ पे ये लड़का बदल रहा है अभी. He is I becoming wanted drum roll. perfect. He has become the Lord of River Run now. Lord of River Run? हाँ, Yeah. he's Lord of Everyone. ये भी मस्त है कपड़े. हाँ, इसके भी मस्त है, एकदम मस्त है. Epic है. The costume designer was on point. डेमन बोल रहा है अगली बार मुझे ऐसे कलर्स चाहिए, फुल ब्लैक नहीं चाहिए. देखो उसको, देखो ऐसे दिखा रहा है उसकी तरफ. वो मान्यवर नहीं है. हमने स्टाइलिस्ट को एकदम स्कोल्ड कर रहा है. I want this. अब भी का भी चाहिए, अब भी का भी. This guy is so grumpy. हाँ. He's from Blackwood na, and the yellow guy who was beheaded was from Bracken. No, he is grumpy because he is saying अब भी कभी कैसे लाऊं, कपड़ा लाने में सिलने में 3 दिन तो जाएगा. हाँ, वो टेलर का खर्चा कौन निकालेगा? This is where he thinks that he has to take decisions which are maybe not his decision, but he has to take them as a king, as a ruler. No? Yes, this is where he's compelled to think, and he's half hallucinated also. I think he's on ayahuasca or some other drug which is being fed to him by the lady. It would be bhang. Yes, Poppy, it क्या would था? be Poppy, milk of the poppy या pop? Milk of poppy, their painkiller. हाँ. their name of painkillers are so sweet, like moon tea, milk of poppy. Small kid is listening, he'll be like, sweet candies, give them to me. Alicent. यही वो सी ना कंप्लेन करता है कि हर कोई थोड़ी ना वो कर सकता है. Like really, he's like comparing himself with other high bonds, na? All his life he was being termed as a bastard. His mother was also given derogatory names. So he's in a very emotional state right now. Adogla. वैसे तो ये दोनों ही टर्न टेबल्स हो जाते हैं. होंगे ना? Yes. मुझे इस सीन में पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि ये सुसाइड करने वाली है. नहीं करेगी. Because Very greedy. But she will be less and less relevant from now, I think. Yes, that is Only showrunners are focusing a lot on Alicent as of now, unlike books. only the showrunners are doing because her relevance is season episode 8 is epic when she comes to visit best friend Rhaenyra. That is like karma serving back. Like Rhaenyra comes to you, you refuse her, now you come to Rhaenyra and Rhaenyra refuses you. It's like अब मुझे समझ में आया कि इसको क्यों आना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे बाकी लोग मना कर देते हैं कि दिस इज नॉट द ओल्ड वेज, ये जो बाकी जो ड्रैगन saucy dragon pit servants. And they speak in Valerian, saying that this is a curse, it's not a good thing.
for letting the low bonds claim Hmm. them. You are doing a big blunder. There is a point she said that she'll be raising an army of bastards. So this thing came to my mind that desperate times need desperate measures. Canara is plainly doing. ट्रंकीलो स्पेनिश जैसा लग रहा है बोलिए। A little bit of Spanish. Yes. इसीलिए इसको जाना पड़ता है उसे बुलाने के लिए। Because she knows Valerian, I think. Vermithor is Vermithor. The T is very like Vermithor. You Actually, see, this is the dragon which was on poster of season 2, right? was the one. Was on In fact, there is one scene also. How will One, be sometime when she turns very powerful. The dragon is like, oh hi granddaughter. दोहायरस होता है ये, दोहायरास बोलती है। This means burn. Dohairas means नो दैट इज द्रकारिस मींस बर्न। sorry. Dracarys. Valar Dorai. Morgul. All men must die and all men must. मस्ट सर्व। ये लुक में बोल रहा था, ये लुक where she is like how you know who you are talking to। The dragon recognizes her blood as well. हाँ। But she belongs from the bloodline I was connected to. I think I have read somewhere because they actually have dragon blood in them, in their body. Yes. तो मतलब when their kids are in womb, उनमें भी ड्रैगन वाले फीचर आते हैं क्योंकि ह्यूमंस में भी ड्रैगन वाला ब्लड ही रहता है। जो वेलेरियन मैजिक है वो उन्होंने सिर्फ ड्रैगन तक सीमित नहीं रखा, वो उनके मतलब जो टारगेरियंस है और वो सब ड्रैगन लॉर्ड से उनके अंदर भी था। और उसके बाद दो चीज ये होती है कि जैसे डेनेरिस का जो बेबी होता है जो कि स्टिलबॉर्न आता है, तो उसका भी बुक में लिखा गया है कि इट हैज ड्रैगन स्केल्स एंड ऐसे वियर्ड सा माउथ और ये सब। और जो रेनेरा का भी जो स्टिलबॉर्न गर्ल आती है विसेनिया, आई थिंक इन द लास्ट एपिसोड। हाँ, तो उसका भी बुक में यही लिखा है कि उसका मतलब उसकी बॉडी पे स्केल्स थे, उसके हार्ट की बजाय एक होल था। सो लाइक ड्रैगन लाइक फीचर। सो दिस टारगेरियंस हैव very close connections with dragons. Yes, right. That's why due to the dragon magic in their blood, their hairs are silver or silver gold, and eyes are deep purple or light purple, just because of that special magic. I have nothing more to tell you. They get these genetic traits. Right. Very, very good, great observation. ये मुझे पता ही नहीं था, आज ही पता चला कि वो ब्लड, ऑल्दो श्रेया ने पहले बोला था कि जेनेटिक मतलब वेलेरिया में जब थे टारगेरियंस, दे डिड मैजिक एंड दे डिड सम जेनेटिक कोडिंग इन देयर ब्लड, इसीलिए दे हैव टू इनब्रीड टू कीप द ब्लड प्योर, क्योंकि आउटब्रीड करेंगे तो ब्लड इम्प्योर हो जाएगा और फिर दे विल नॉट बी एबल टू कंट्रोल द ड्रैगन्स, और द ड्रैगन्स विल नॉट लिसन टू देम बिकॉज नाउ दे डोंट हैव दैट जेनेटिकली coded blood anymore, and that's why they have to inbreed. That's why they marry or sleep with their sisters and brothers and aunts and uncles. Yes. You know, how were these dragons created? So before the doom of Valeria, there were certain creatures in the volcanoes known as Vyrons, and then dragon-like beings who couldn't spit fire. The Vyrons were used to swim in lava, and the other dragon-like creatures would fly, but they couldn't breathe fire. So they genetically combined both of them and made a flying, fire-spitting beast. And then even more magic was involved, and their so-called rider was tied to them through blood. It was done by the fire wages of Ashai and all. It was really dark. Correct. Because as you go to the east of Essos, you know, there is another dark space, right? Very. Right, and then that's why you need fire magic and all that to keep those dark creatures away from city or civilization or humanity. True. That's happened. Epic. I'm ready. Scary scene, but he is quite brave here. He growls at the dragon back. Here I come to be your barbecue. एक मीम था कि उसकी बेटी को खाना नहीं मिल रहा था क्योंकि यही सब खा जा रहा था। दिखने में इतना बड़ा है ना। Very cute. हेम्सवर्थ। ये बहुत सही सरप्राइज था, मतलब इस पे कभी भरोसा नहीं हुआ था कि ये सच बोल रहा है कि ये ड्रैगन सीड है, क्योंकि ऐसा लगता था पीने के लिए झूठ बोल रहा होगा वहाँ मैखाने He में। almost keeps his hairs dyed. और ये ड्रैगन थोड़ा शांत रहता है like in books also. This is a female dragon, na? Silver wing. That's why. This last scene is also amazing. It's like they're traveling from one apartment to another apartment. जैसे वो किंग्स लैंडिंग से इतना
ड्रैगन स्टोन आते जाते रहते हैं। वैसे दूर नहीं है, इट्स जस्ट डिस्टेंस बाय सी। अच्छा, ये सिल्वर विंग वहां से किंग्स लैंडिंग तक ले जाता है एंड दैट्स व्हाई ही गेट्स पुल्ड और व्हाटएवर एंग्री एंड देन वो तुरंत दौड़ के घोड़ा गाड़ी लेके वेगार लेके भागता है एंड देन ये रियलाइजेस भाई वहां पे तो 3-3 है, 3-3 को कैसे लड़ोगे, है ना। ये एक वहां जाता है सिल्वर विंग लेके और ये भी होता है कि उसकी एक आंख से 3 कैसे इतने दूर से दिख जाते हैं। So sharp, no? टर्न अराउंड करता है। Turn around. देखो। He commands the Vagor so many times. हाँ, सुनता नहीं है ना वेगार अपने मन की करता है, तो ये 2-3 बार बोलना पड़ता है वेगार को। Vagor is one giant oaf. वेगार भी लाइक विसेनिया ने तो कभी नहीं बोला था ऐसे। हाँ, अभी वो उड़ के आया और ये यहाँ पे विसेनिया ये दो जो हैं यहाँ पे वो सेंस कर लेता है कि 2 और हैं। All three sense together. Rhaenyra is like, I will eat you. Come here. कुछ होता नहीं फिर। एक मीम था जिसमें रेनेरा के ऐसे मल्टीपल टाइम्स ऐसे एंग्री और स्टर्न लुक दिखाते हैं और फिर लगता है कि अब तो खत्म कर देंगे, और पर कुछ होता कभी भी नहीं है।